ऐसा हर्फ या अलामत जो बदल सकता है, चेंज होता है। आमतौर पर x, y, z वगैरह इस्तेमाल होते हैं। मिसाल x में x वेरिएबल है। वेरिएबल हमेशा बदलने वाली क्वांटिटी को जाहिर करता है। डू कांस्टेंट साबित अदद, ऐसा अदद जो हमेशा एक ही रहता है, नहीं बदलता। मिसाल 5x + 7 में 7 कांस्टेंट है और 2x² + 3x + 9 में 9 कांस्टेंट है। ये वो हिस्सा होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। -3 कोएफिशिएंट ज़रब देने वाला अदद, वेरिएबल के साथ जड़ा हुआ अदद। मिसाल x में 5 कोएफिशिएंट है, -3 में -3 कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट बताता है कि वेरिएबल कितनी बार लिया गया है। मिसालों से पहचान 1 7x + 9 वेरिएबल = x, कोएफिशिएंट = 7 - कांस्टेंट = 9। Do -4y + 6y - 2 variable = y, coefficient is -4 for y through 6 for y, constant -2. 3a - 5a + 8 variable coefficient = 5, constant = 8. याद रखने का आसान तरीका, वेरिएबल = बदलने वाला x, y, z, कोएफिशिएंट = वेरिएबल के साथ जड़ा अदद, कांस्टेंट अकेला अदद जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। क्या आप चाहते हैं मैं एक चार्ट टेबल बना दूं जिसमें मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस देकर वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट अलग अलग दिखाऊं? ठीक है, अब मैं आपको 5 सवालात देता हूं जिनमें आपको वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट पहचानना है और साथ इनके हल भी दिखा देता हूं। Question 1 expression 7x + 9 variable x minus coefficient = 7 minus constant = 9. Question 2 expression -4y² + 6y - 2 variable = y, coefficients = -4 for y2, 6 for y, constant = -2. Question 3 expression 5a² - 2a² + 7 minus variables a minus coefficients = 5 for a3 - 2 for a², constant = 7. Question 4 expression 9m² n - 3 + 4 variables = mn, coefficients = 9 for m3 for m, constant = 4. Question 5 expression 2x² + 5xy - 8 variables = x, y, coefficients 2 for x², 5 for xy, constant = -8. इस तरह हम किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को आसानी से पहचान सकते हैं। बेहतरीन ये सवाल कहता है आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी हमें यह देखना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। याद रखें, पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स के नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स होते हैं 0, 1, 2, 3। वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं आ सकते। वेरिएबल्स के ऊपर ग्रुट्स या फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए। हल I -1 polynomial, constant polynomial. Y, not polynomial, variable in denominator. Frac 1 x minus x, not polynomial, term front x, has negative power. 5x plus y, polynomial, coefficients can be to numbers, that's fine. V, 5xy3, polynomial, powers are non-negative integers. Vi, 2 minus x, polynomial, linear polynomial, 1, 3. Polynomial, constant polynomial. Vi frac 1 x squared plus 3. Not polynomial, has frac 1 x squared rules ix. x2 plus 3x minus 1, polynomial, quadratic polynomial. x, 3, 5 plus 4, x. Not polynomial because of frac 4x, xi, ax2 plus bx plus c. Polynomial, quadratic polynomial in x2, 2 plus 3a plus 1. Polynomial, quadratic polynomial in a. Final answer, polynomials are I, x, xi, c. Not polynomials are 3 vix. क्या आप चाहते हैं मैं उनको एक टेबल की शक्ल में बना दूं जिसमें अलग अलग लिखा हो पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल? बहुत अच्छा, आपने जो सवाल भेजा है इसमें हर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट ज़रब देने वाले अदद, वेरिएबल्स, मुतगय्यर और कांस्टेंट्स साबित अग लिखने। मैं इन सबको आसान अंदाज में हल कर देता हूं।
मैं इन सबको आसान I 3x plus 1 minus variables x minus coefficients 3 minus constant 1 आरो variables कोई नहीं, coefficients कोई नहीं, constant 2a 2 by frac 3 b minus 3 variables a b coefficients 2 for a 2 a frac 1 3 for b constant minus 3 iv 3l minus 2m variables lm coefficients 3 minus 2 constant कोई नहीं va plus b squared minus 2c plus 4 a b c coefficients 1 for a and for b squared minus 2 for c constant for I px was qy plus r variables xy coefficients pq constant I minus 5x plus 9y minus 4 variables x y and 5 9 constant minus 4 monaso 3 q p minus 2 through q equal 9p minus 4q variables pq coefficients 9 minus 2 constant ix y squared y minus 1 variables y coefficients 1 for y minus 1 constants next cut 3a is 9ab plus cross variables cut 3a ni constant below my next I conix y x 2x 2a variables x coefficients 2 constant 3 and the upside variables कोई नहीं coefficients कोई नहीं constant अब ये सारे सवाल आसानी से सॉल्व हो गए बेहतरीन ये सवाल कहता है identify the polynomials from the following यानी हमें ये देखना है कि कौन सा एक्सप्रेशन polynomial है और कौन सा नहीं याद रखें polynomial में variables के non-negative integer powers होते हैं 0 1 2 3 variables denominator में नहीं आ सकते variables के ऊपर grots या fraction power नहीं होनी चाहिए हल I minus 1 polynomial constant polynomial y, not polynomial variable in denominator. Frac 1 x minus x, not polynomial term franth x has negative power. 5x plus y, polynomial coefficients can be to numbers, that's fine. v, 5xy3 polynomial powers are non-negative integers. vi, 2 minus x polynomial, linear polynomial, 1, 3. Polynomial, constant polynomial. vi frac 1 x squared plus 3. Not polynomial has frac 1 x squared rules ix. x2 plus 3x minus 1 polynomial, quadratic polynomial. x, 3 5 plus 4 x. Not polynomial because of frac 4x, xi, ax2 plus bx plus c. Polynomial, quadratic polynomial in x2 2 plus 3a plus 1. Polynomial, quadratic polynomial in a. Final answer, polynomials are I, ix, xi, c. Not polynomials are 3 vix. क्या